ओके सो लास्ट क्लास में आई थिंक वी हैड सेव्ड द डेटा इन द डेटाबेस इन दिस केस. तो आज की क्लास में वी विल डिस्प्ले द डेटा टू द यूजर, क्योंकि वॉट एवर द इंफॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड वो मुझे यूजर को डिस्प्ले करना है. तो डिस्प्ले करने के लिए फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू ऐड अ न्यू वेब पेज इन दिस केस. सो लेट अस गो टू द टेम्पलेट्स फोल्डर. टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर एक और एक फाइल लेके आई विल कॉल इट एज display students.html. HTML tag. I'll just put a label called student details. Same thing in the h3 tag in this case. Okay. So आप h2 में जो यूज किए हैं यूज द सेम font size. Anyway, उसको बाद में CSS को modify करेंगे. Okay. So just I have created a HTML page for the time being. Whenever you create a HTML file, you have to create a path to access that in the urls.py. तो urls.py में एक path add करो to access that page in this. So I'll call it as display students. All students I want to fetch and display in this case. So I'll put same thing. That is the URL में जो भी path access करना है I'll use this. Same way function का नाम भी I'll give display student and name property also I'll give display student in this. So एक HTML page create करें, उसके बाद we have added one URL path in this case. Then go to views.py, create one function. That is def function name request colon. Inside this fetch the data in this case. अभी data कैसे fetch कर रहा है? Very simple. All the data we are storing inside the model called as student data. Okay. तो इसको copy करो. I'll create one variable in this. Call it as student data equal to the name of the class in this case dot objects बोल के एक ऑप्शन आता है. Objects dot all is a function. ओके. तो स्टूडेंट डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाता है. ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है कॉल्ड एज ऑल, मतलब फेच ऑल द डेटा इन दिस एंड ऑल द डेटा विल बी फेच्ड एंड इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल कॉल्ड एज स्टूडेंट डेटा और आई विल कॉल इट एज स्टूडेंट डिटेल्स. मेक श्योर जो भी वेरिएबल का नाम आप दे रहे वो मॉडल का नाम नहीं होना चाहिए एंड फंक्शन का नाम भी नहीं होना चाहिए. ओके. सो मेक श्योर दैट इज मेंटेन्ड इन दिस केस. Now inside this, after this very simple, go to the web page in this return render inside this request property. उसके अंदर the name of the HTML page in this case and most important flower bracket के अंदर ये आपका जो भी डेटा आप स्टोर करें वो डेटा को पैरामीटर बोल के पास करो इन द डिक्शनरी फॉर्मेट. इन दिस केस इसको डिक्शनरी फॉर्मेट बोलते हैं. फ्लावर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट है दिस. ओके. सो इट विल फेच द डेटा, इट विल सेंड द डेटा टू द HTML पेज इनसाइड द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज स्टूडेंट डिटेल्स. नाउ आई विल गो टू द डिस्प्ले HTML. यहाँ पे आई वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट डिटेल्स इन दिस. तो स्टूडेंट डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए वेरी सिंपल, यूज अ फॉर लूप for SD in student details. तो what happens is अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट का डेटा है, 1 स्टूडेंट्स पूरा डेटा इसके अंदर स्टोर होता है ईच टाइम. ओके. एक स्टूडेंट का जो भी इंफॉर्मेशन मैंने लिया था रो बाय रो इट विल स्टोर इट इनसाइड SD. SD is having one row which is having all the data of one single student in this. और यहाँ पे फॉर लूप को कैसे एंड करना, इट इज वेरी सिंपल, यूज एंड फॉर. ओके. एंड इनसाइड दिस आप वो डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग 2 फ्लावर ब्रैकेट्स. कैसे? वेरी सिंपल, SD डॉट क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है इन द मॉडल्स.py. आपका जो भी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करे वो वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट करो बस. सो आई हैव द स्टूडेंट नेम इन दिस. उसी तरह I want the mobile number, so
I'll take a mobile number. उसके बाद I have the email ID. तो copy paste the email ID. Course name, course name. Password कभी भी display मत करो. Password should never be displayed in this. And whenever you are fetching these data, याद रखिए आपके टेबल के अंदर एक by default फीचर आता है called as ID. Though you have not created it, there is no property called ID in this case. लेकिन आपके टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, तो what the Django framework will do is by default it will add one column called as ID, which will be unique for each and every student in this case. सेव करो, हो गया बस. Run the application in this case. So cmd cd slash cd college, and inside the college python manage.py run server. तो रन सर्वर आता है. उसके बाद ब्राउजर ओपन करो, टाइप द यूआरएल, दैट इज localhost colon it is display student students, so it is display students. तो हम लोग का सब स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे आ गया, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट. ऑफ कोर्स यू हैव मेनी ऑप्शंस इन दिस केस. सर मेरे को ज्यादा काम नहीं करना है, यू कैन कॉपी द होल कंटेंट, go to the chat gpt in this case. I'll open the chat gpt and tell him कंटेंट पूरा डालो, improve UI. तो वो पूरा खुद रेडी करके दे देगा. It saves your time in this case. आपका टाइम बचेगा by using this method. So best option we have. I think it's over. Yes. और आपको सजेशन दे रहा है, और यहाँ पे क्या किए suggestions in this. Anyway, I'll copy paste this as of now. Looks better. Okay, कुछ नहीं. He has used the table tag और यहाँ पे card tag बोल के आया है bootstrap में. That is, we have something called as the card. Card बोले तो वो box आ जाता है. Okay. Then he has used card body, that is the main content of our this thing. वो blue color tag color का जो strip आया था, that is card header. वो बॉक्स जो है कार्ड है, उसके अंदर ये कंटेंट है आपका कार्ड हेडर, एंड दिस रीजन वो पीछे का जो बॉक्स बना है दैट इज कार्ड बॉडी. कार्ड बॉडी के अंदर ही हैज यूज्ड अ टेबल टैग इन दिस, और ही हैज यूज्ड अ टेबल टैग. टेबल टैग के अंदर उसको बॉर्डर चाहिए, सो ही हैज यूज्ड टेबल बॉर्डर. उसके बाद टेबल स्ट्रिप्ड. स्ट्रिप्ड यानी इट विल हैव एक लाइट कलर, एक डार्क कलर बैकग्राउंड. फिर उसको कंटेंट चाहिए था टेबल इन द सेंटर इन दिस केस. सो टेबल सेंटर के लिए ही हैज यूज्ड अलाइन मिडल इन दिस केस. तो पूरा वो डिवीजन के अंदर वॉट एवर द स्पेस यू आर सीइंग ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों का स्पेस सेम रखने के लिए हैज यूज्ड अलाइन मिडल. टेक्स्ट सेंटर, उसके अंदर जो टेक्स्ट है, आई वांट दैट टेक्स्ट टू बी इन द मिडल इन दिस केस, सो फॉर दैट ही हैज यूज्ड अ टेक्स्ट सेंटर इन दिस केस. एंड उसके बाद टेबल टैग में ही हैज यूज्ड टेबल डार्क, दैट इज ये ऊपर का जो हेडर है उसको आई वांटेड टू बी इन अ डार्क कलर इन दिस केस, सो ही हैज पुट इट इन द डार्क कलर. उसके बाद नॉर्मल TR-TD यूज कर रहा है. TH के अंदर ऑल द हेडर्स इन दिस केस जो मैंने नहीं दिया, ही हिमसेल्फ टुक इट थ्रू दीज वेरिएबल्स. वेरिएबल का नाम जो भी है वही है यूज किया है वो. So I had given ID, he has used it as ID. I gave student name, वहाँ पे student name. So whatever the column names I had given, based on that he has used those column names in this case. Okay. तो ये आपको लिखना है, आधा घंटा लगेगा if you want to write like this in this case. So this is how your save code, display code option is there in this case.
Clear with this point? No doubt in this. So this is an option how to display the data to the user in this. लेकिन हम ये काम नहीं करते. We never write all the data to be displayed on the web page. We never do that. बिकॉज रीजन ये है कि अगर मेरे पास 1,000 स्टूडेंट्स है, सो ऑल 1,000 स्टूडेंट्स का डेटा जब आएगा तो इट विल बी पॉपुलेटेड विद ह्यूज डेटा इन दिस. सो वी डोंट वांट सच ऑप्शंस इन दिस केस. तो उसके लिए वी कीप अ ऑप्शन ऑफ अ सर्च ऑपरेशन. सर्च ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे को जो भी नाम चाहिए वो नाम पे डेटा को रिट्रीव करना है. ओके, दैट इज व्हाट वी जनरली डू इट इन दिस केस. तो उसको बाद में करेंगे. यू कैन राइट डाउन दिस कोड फॉर displaying the data. We can have the views function, views.py may write on this function. I have to give an option in this case, that is apply filter option on client side. On client side matlab he will make use of a feature called as javascript in this case. तो javascript यूज करके वो फीचर यहाँ पे डालेगा. It will be more dynamic, more attractive compared to the server side in this. So filter option on client side using javascript. So it will give you the whole content. सिर्फ content को copy paste करना है बस, और कुछ नहीं. So ये तो same data he is applying in this case. यहाँ पे change होता है. Okay. So in this वो क्या करता है, एक text box डालता है. वो text box के अंदर कुछ भी टाइप करो, यहाँ में वो डेटा को हाइड कर देता है बस. ओके, अदर डेटा विच डज नॉट मैच दैट टेक्स्ट उसको हाइड कर देना, बस उतना ही काम है. और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहता है, दैट इज इनपुट टैग. he has added one search button in this case, so you can see the improvement in the code. okay, कोड क्या है बाद में देखेंगे. that's it. ऊपर एक बॉक्स है, वो थोड़ा हमको करना पड़ेगा, लाइक फोकस उसके अंदर डिस्प्ले करना है. सो आई विल कॉल इट एज ऑटो फोकस इक्वल टू ऑन. ओके, तो ना सब तो डेटा सेम है, सो पूरा आएगा. सो इफ ऐसे एस ए नहीं है वहाँ पे डेटा, सो इट इज नॉट डिस्प्लेइंग एनीथिंग इन दिस. थोड़ा ऐड करेंगे, विल ऐड सम रिकॉर्ड्स इन दिस केस. से लोकल होस्ट register student, say name Sachin 9876543210, sachin@gmail.com. उसका मोबाइल नंबर कोई दे रहा हूँ, किरण. उसका मोबाइल नंबर चेंज, kiran@gmail.com. कोर्स दिया है, मोबाइल नंबर चेंज, रमेश @gmail.com. then we have Ajay @gmail.com. अजय के बाद राहुल और तो सबको ऐड किए, रिफ्रेश, सबका डेटा यहाँ पे आ रहा है. ओके, सो नाउ इसमें से इफ आई जस्ट टाइप AJA, अजय का डेटा आ गया. डिलीट करो सबका डेटा वापस. से आई वांट टू हैव राहुल, यहाँ पे सिर्फ आर्य बोल के टाइप किया, तो जिस स्टूडेंट का नाम के अंदर आर्य बोल के है, इट इज मैचिंग दैट पर्टिकुलर डेटा. सर अगर मैं यहाँ पे GA दूं, nobody in this case, so I'm fetching the data based on the name in this. ठीक है सर, कैसे काम करता है.
So very simple. यहाँ पे उन्होंने they have used a text box in this case, okay, and they have given a name as search input. This is very important. And he is searching based on ID. He is searching based on the name, mobile number, email ID option दिया है. So ये तो पूरा display code है as it is what you have written. Main part is यहाँ पे. Inside this, he has used a script tag in this case. Document.get element by ID search input. मतलब वो text box के अंदर जो भी आपने टाइप किया है, सो उसका अंदर के की अप इवेंट, की अप मैंने प्रेस करके की को छोड़ दिया, तब ये फंक्शन कॉल होता है. ये फंक्शन क्या कर रहा है? वेरी सिंपल. वॉट एवर यू हैव टाइप्ड उसको एक स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करता है. कन्वर्ट करने के बाद रोज में, इन द रोज ही इज टेकिंग स्टूडेंट टेबल डेटा के अंदर टी बॉडी के अंदर टी आर जो है, दैट इज he is pointing to this particular row. You can see table student के अंदर tr के अंदर whatever the content is there, दोनों है, even the heading and the data in this case. So he is now pointing to that particular row. तो rows के अंदर वो जो भी कंटेंट है, कंटेंट मिल गया. वो कंटेंट में से वो क्या कर रहा है? he is fetching the text. टेक्स्ट फेच करके ही इज यहाँ पे वॉट एवर द डेटा इज देयर इन दैट एंटायर रो, उसको पूरा लोअर केस में कन्वर्ट करके ही इज कॉपिंग दैट इनसाइड द वेरिएबल कॉल्ड एज टेक्स्ट. सो टेक्स्ट के अंदर ये पूरा रो का इंफॉर्मेशन, दिस कंप्लीट रो, फर्स्ट रो का इंफॉर्मेशन लेता है. तो नाउ वी हैव दैट एंटायर थिंग हियर. ओके, नेक्स्ट उसके बाद रोज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, मतलब जो डिस्प्ले करने का है. टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स फिल्टर. फिल्टर के अंदर जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप किया वो डेटा है. टेक्स्ट के अंदर वो पूरा रो का डेटा है. अगर उसके अंदर इंक्लूड्स बोले तो कंटेंट्स वो है कि नहीं चेक कर रहे हैं. अगर है तो डिस्प्ले करेगा, नहीं है तो इट विल डिस्प्ले नन, मतलब द डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड. सो वन सिंपल लाइन इज राइटिंग द क्वेरी इन दिस केस. So this is how you can easily filter the data in the script in this case. But this point, no doubt in this case. लेकिन सर प्रॉब्लम तो वही है, when I load the page for the first time, सब स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, which I don't want in this case. So very simple, क्या करो? You can tell the ChatGPT in this case. That is, do not display the data on page load. So जब पेज लोड होता है, डोंट डिस्प्ले द डेटा इन दिस केस. ओके, तो सिर्फ सर्च पे वो काम करना चाहिए. यहाँ पे वो खुद पहचान लिया, हाइड ऑल रोज अंटिल यूजर सर्चेस. जितना ChatGPT को यूज करोगे उतना काम फास्ट होगा. दिस इज व्हाट द कंपनीज नीड टुडे. ओके, अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बोल के एक डेजिग्नेशन है. दे मेक यूज ऑफ दीज प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो ChatGPT के साथ बात करके काम कर सकते हैं. ओके, नहीं तो ये कोड आपको लिखना है, अगेन यू विल टेक हाफ एन आवर टाइम इन दिस केस. तो मेरे को उतना टाइम नहीं करना. से कॉपी दिस, पेस्ट इट इन दिस, हो गया काम. ओके, सेव एंड रिफ्रेश. कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है. आई सर्च फॉर अ नेम, वीआईबी डेटा आ गया. दिस इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग इन दिस, बिकॉज डेटा, पूरा डेटा लोड हुआ तो इट विल टेक मोर टाइम. ज्यादा डेटा इट विल टेक इंक्रीज द टाइम इन दिस. अभी समझो इफ आई क्रिएट दिस एप्लीकेशन फॉर एसबीआर कॉलेज और एसबीआर यूनिवर्सिटी, वो 100 साल का यूनिवर्सिटी है, तो कितने स्टूडेंट्स है, सबका डेटा लोड होना होता है, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम इन दिस. तो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ. यहाँ पे क्या लिखे हैं? वेरी सिंपल. उसने थोड़ा मॉडिफाई किया है आपके फंक्शन के अंदर इन दिस केस. दैट इज, जब तक फिल्टर के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, डिस्प्ले नथिंग. बट दिस, जब आपके पास डेटा है, दैट इज अगर वो नल है, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एंड आपके पास डेटा भी आया है, इन दैट केस इट विल डिस्प्ले यू द डेटा. नहीं तो वो क्या करता है, इट विल डिस्प्ले एम्प्टी इन दिस केस. तो सिर्फ स्लाइट मॉडिफिकेशन टू दैट कोड एक इफ एल्स कंडीशन में डाल दिया. सो इफ एल्स कंडीशन में आपका
वो डेटा हाइड होना कि डिस्प्ले होना मालूम हो जाता है. Got this point? So this is how we can make it appear better compared to the previous data in this case. अब ये तो data same है, what there is no change in this. सिर्फ उसको add किया है, मतलब he has added one feature in this, that is the script part in this case. The script part controls the data in this. Clear with this point? Any doubt in this? Can write down this script part को लिखो इसका, because table display करने का है तो you already know. Write down the script part of that.